वेलकम स्टूडेंट्स। सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया है रूट ऑफ tan x माइनस tan स्क्वायर x का डोमेन कितना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, सो दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स थ्री फंक्शंस। सो आप देख सकते हैं एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है इसमें, एंड यू हैव ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्योंकि tan x माइनस tan स्क्वायर x यू हैव ए क्वाड्रेटिक फंक्शन. So you have to understand the behavior of all the three functions. So first, in the analysis of domain, let us start from the outermost function. Outermost function is square root. सबसे लास्ट में अप्लाई करें. So square root का कंडीशन क्या है? Square root के अंदर जो भी है tan x minus tan square x जो है वो greater than or equal to 0 होना चाहिए. So tan x minus tan square x is greater than or equal to 0. So इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आई जस्ट पुट लेट tan x is equal to t. tan x को t मानता हूं. So let us see where tan x has to lie for this function to be greater than 0. So t minus t square is greater than or equal to 0. So this is a very easy quadratic inequality. So quadratic inequality को solve करने से पहले the general method is we make the coefficient of the highest power of t as positive. ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट को हम पॉजिटिव करेंगे. So you have t square coefficient negative. So what I do is I'll multiply it with -1. So t square minus t is less than or equal to 0. -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो साइन रिवर्स हो जाएगा. So t square minus t is less than 0. So t into t minus 1 is less than or equal to 0. So quadratic expression less than 0 implies the variable lies between the roots. So इसका roots क्या है? 1 and 0. t का मतलब t minus 0. So the roots of this quadratic expression are 0 and 1. So t belongs to close at 0 to 1. ठीक है? So अगर t minus t square greater than or equal to 0 होना है तो t has to lie between 0 and 1. So अगर t 0 और 1 के बीच में होना है तो t का मतलब क्या है? So let us back substitute my t. So tan x should be between 0 and 1. So tan x 0 to 1 के बीच में होना चाहिए. We know that tan x is a periodic function. So this is a periodic inequality. ठीक है, हम देखा है periodic inequalities कैसे solve करना है. This is a periodic inequality. So periodic inequalities कैसे solve करते हैं? एक पीरियड में हम इन इक्वेशन को solve करते हैं and we'll add the nt on both the sides. So एक इंटरवल में मैं solve करता हूं. एक इंटरवल का मतलब है -π/2 to π/2. So tan x का period is pi. So I will take an interval of -π/2 to π/2. -π/2 से लेके π/2 तक. आपको पता है ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ग्राफ ऑफ tan. So tan 0 और 1 के बीच में होना चाहिए. The value of tan should be between 0 and 1. So x कहां से कहां तक हो सकते हैं? Very easy है, 0 to π/4. So x belongs to closed 0 to closed π/4. But this is not the complete solution. So आपको complete solution के लिए क्या करते हैं? So जो भी आंसर आया इसका, so we add n times period on both sides. So n times pi is the period. So n pi plus 0 to n pi plus π/4 is the value of x. So x यहां से यहां तक हो सकते हैं. So what is the domain? My domain is n pi to n pi plus π/4, where n belongs to integers. So इसमें we have three functions. एक square root function. So first square root को एनालाइज किया. square root का अंदर जो नंबर है पॉजिटिव होना चाहिए. इसके बाद क्वाड्रेटिक है, tan x minus tan square x is quadratic. So quadratic एनालिसिस किया. So वहां से our final trigonometric analysis have started. So tan x is in between 0 and 1. So is a periodic inequality. उसका एक पीरियड में हम सॉल्व करते हैं एंड विल एड n टाइम्स टाइम पीरियड ऑन बोथ साइड्स. सो दिस विल बी माय डोमेन. एंड लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसमें आपका फंक्शन इज नथिंग बट 1/√1 minus cos x. इसका डोमेन पूछ रहे हैं. सो अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल फंक्शन. सो एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपको. सो 1 में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रूट का प्रॉब्लम है. So 1 minus cos x has to be greater than 0.
So it cannot be equal to 0. क्योंकि डिनोमिनेटर में है 1 minus cos x, it has to be greater than 0. So that implies 1 is greater than cos x. That implies cos x has to be less than 1. So आपको बेसिक एनालिसिस तो पता है cos x के बारे में. Cos x is always less than or equal to 1. So हमको cos x less than 1 चाहिए. I want strictly cos x to be less than 1. इसका मतलब है just cos x is equal to 1 should not happen. So इस फंक्शन का प्रॉब्लम तब आएगा when cos x is equal to 1. So cos x 1 जहां होगा, those values of x are to be eliminated. So this implies cos x is not equal to 1. So this implies x is not equal to 2n pi. So क्योंकि cos x is equal to 1 का सोल्यूशन है even multiples of pi. So even multiples of pi में cos x 1 होगा. So x is not equal to 2n pi. So these values are to be excluded and the remaining values comes in the domain. So इसका domain क्या होगा? Domain is all real numbers except 2n pi's, where n belongs to integers. So all real numbers except the numbers of the form 2n pi. Thank you.